Do you know which is the hardest mountain to climb? You would probably say Mount Everest since it's the highest mountain. But that is incorrect. The hardest one is the second highest mountain, K2. Due to the difficulty of its ascent, it's called the Savage Mountain. It is harder to climb K2 because we know that along with height, there are many other factors to consider. Steepness is one of them. For example, let's consider these two mountains. The right one clearly has more altitude, but the left one will be harder to climb as it's steeper. Now let me ask you a question. What do we mean by steepness? For example, consider these two straight lines. Which one is steeper? Here the difference is subtle, but we can see that it's the second one. But can you think of a way to concretely prove that the second one is steeper? One simple way is to draw the horizontal and vertical lines like this, measure their lengths, and find the ratio of the vertical length to the horizontal length. On substituting the values, we get 1 and 1.5. The second ratio is clearly greater. What does this tell us? If we walk along these lines, this ratio tells us how much vertical distance we cover relative to the horizontal distance. So if the ratio is higher, it means that the slant line is steeper. We can also see this as the distance covered while going up per unit of the distance while going across. There's another way to know which line is steeper, and that is to find this angle. Greater the angle, steeper will be the line. But notice that these two lines are connected to the angle by the trigonometric tangent function. This ratio is equal to tan theta 1 and this is equal to tan theta 2. Right, this concept you have already done. How do you measure the steepness? Yes, Anuvanshika? At the angle and the ratio of the hypotenuse, Right, the angle and the ratios, if you take the um, perpendicular upon base. But what is the concept called? You have already done this, right? slopes. Slopes, right. So this is, they're talking about slopes. Let's see. Such a ratio for a straight line is called its slope. It's the measure of the steepness of the line. Now look at this curve. What is the slope of this curve? Does it even make sense to ask this? What do you think? In this video, we'll understand what this means. Here, the process of differentiation helps us. Also, we know that such a curve can be represented algebraically by a function between two variables. We will see that this slope is connected to the idea of the derivative of a function. So let's continue with our question. One thing we can clearly see here is that different positions of the curve will have different steepness. We can intuitively see that as we move from the left towards the right along the curve, it gets steeper. So the slope of the curve in general doesn't make sense. So let's focus our attention around this point P. What will be the slope at this point? For this, let me ask you one question. Is the Earth flat or round? You'd probably be laughing because we all know that the Earth is almost round in shape. But notice the surroundings around you. It seems that the Earth is flat. Why is it so? Consider this circle as the representation of the Earth. And let's say you are currently situated here. If we zoom in around this portion of the curved line, we see that it becomes less and less curved. It looks almost like a straight line. So let's say we draw a straight line only intersecting the curve at this point. We can see that the curved line is almost the same as this straight line.
We know that this line, which passes through only one point of the curve, is called the tangent line at that point. Take a moment and just observe what we found. This is the most important idea on which calculus is built. A curved line in a very small region around a point on it can be approximated by a straight line. This straight line is the tangent line at this point. So this solves our problem. The slope of the curve at a point will be equal to the slope of the tangent line at that point. And we are familiar with how to find the slope of a straight line. So how do we find the slope of the tangent line at this point? In this question, we will continue this in the next part. Previously, we saw what we meant by a function between two variables, x and y. A function tells us how the value of one variable depends on another variable. So if the value of x changes from x0 to x0 plus delta x, then the value of y will also change from y0 to y0 plus delta y. Now look at this ratio, delta y over delta x. It tells us the rate at which the value of y changes in proportion to the change in x. For example, consider these two ratios. As the ratio in the second case is greater, the value of y will change relatively faster here. This rate of change for a function is actually related to the slope of a curve. Let's see how. Let's say the graph of this function is a straight line like this. x0, y0 is this point, and when the value of x changes by delta x, we reach this point. Now consider the ratio delta y over delta x. We saw earlier that for a straight line, this ratio is the measure of its steepness. So, the rate of change in y with respect to x is equal to the slope of this line. Now we... Okay, so you just see P point is x0, y0, and after delta x, after you have moved delta x, so this point is going to be x0 plus delta x. That is why its x coordinate is x0 plus delta x. And since it was y0, तो हमने y के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव किया डेल्टा y. So that is why इसका y कोऑर्डिनेट हो गया y0 plus delta y. So if you have to measure the slope of this line, so that is change in y by change in x, which is the slope of this line. और उसको हम इससे लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से लिख सकते हैं. We can see that for a straight line, its slope is constant throughout. So its rate of change will also be constant. But what if instead of this, the graph of the function is given by a curved line? The slope at a point tells us the rate of change at that point. We've seen earlier that in a very small region around a point, the curve can be thought of as a straight line. This is the tangent line at this point. So we see that this line is equal to... But now, we can see that depending on the point on the curve, the slope will change. So this means, depending on the value of the x variable, the rate of change will also vary. Now let's look at an example to understand this. Let's say in this function, y is the distance traveled by an object in motion, and x is the time taken for the distance traveled. Then the rate of change in y with respect to x will be equal to the speed of the object. In the first case, we know that the rate of change is constant. So the speed of the object will be constant throughout its motion. While in the second case, the rate of change is not constant. So here, this rate will tell us the instantaneous speed of the object. For this reason, the rate of change for a function at a particular value of x, x0 is called as the instantaneous rate of change at x0. So to conclude, a very small portion of a curve around a point can be approximated by the tangent line at that point.
The slope of this tangent line tells us the instantaneous rate of change of the function at that point. But how do we find this slope or instantaneous rate of change? Do you remember that in one of our previous videos, we found the instantaneous speed of an object? To find the instantaneous speed, we have to use the process of differentiation. Let's say we want to find the instantaneous speed at this point P, that is at the time instant x0. For this, we first find the average speed for some time interval delta x. At x0, the distance covered will be this, and at x0 plus delta x, it will be this. So the average speed in the time interval delta x will be equal to this. For a function, this ratio is called as the average rate of change. Now let's say we draw a straight line between these 2 points. It's called the secant line. We see that the slope of this secant line will be equal to the average speed. So we see change. Okay, is this much clear? That we are finding the speed of any particle, let's say, and you have taken point P and Q, and the average speed between these 2 points is coming out as f of x0 plus delta x minus fx0, because that is going to be the change in y. आप ये वाला portion, ये पूरा y minus this नीचे वाला y करोगे, so that is your change in y upon change in x, क्योंकि change in x तो ये है final minus the initial, so this comes out as delta x. So this is your average speed, right? And also जो अभी हम concept देख रहे हैं उसमें हम बोल रहे हैं slope of the tangent to a curve. वो हमारे पास क्या है, एक curve के ऊपर tangent line से दिया जाएगा. जो भी हम चेंज देखना चाह रहे हैं कर्व के ऊपर, लाइन के ऊपर चेंज हम सीधा चेंज इन y बाय चेंज इन x करके देख रहे हैं, बट अगर कर्व के लिए चाहिए तो कर्व के लिए यही सेम डेफिनेशन बन जाती है व्हेन वी सी द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ यहाँ पर सबसे बेसिक डिफरेंस जो आप देख रहे हो वो ये है कि जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज इज नॉट इंस्टेंटेनियस. एवरेज मीन्स कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम निकाल रहे हैं कितना हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस जब आप बात करते हो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हो, इंस्टेंट पर बात कर रहे हो. तो जब भी कर्व पर आप बात करोगे कि चेंज निकालना है एक पॉइंट पर, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस चेंज, और यहाँ पर जो हम निकालना चाह रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाह रहे हैं. तो हमने स्टार्ट अभी किया है एवरेज स्पीड से और इसी को कन्वर्ट करेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पर. एनी डाउट टिल यू वांट टू आस्क मैम? नो मैम. ओके. Now what's the next step? How do we find the instantaneous speed from this average speed? For this, we find the average speed in shorter time intervals, that is, as delta x tends to 0. We say that when the limit delta x tends to 0, the average speed approaches the instantaneous speed. This instantaneous speed is the instantaneous rate of change at x0. Now what happens to this secant line as delta x tends to 0? Let's say we find the average rate of change between points P and Q1, Q2 and so on. We can see that as delta x tends to 0, these points come closer and closer to the point P. See now, if you were finding out the average rate of change, that means P और Q के बीच में अगर आप change देख रहे थे तो वो सिर्फ इतना था without limit, right? सिर्फ इतना था, that was my average rate of change. but अगर मुझे instantaneous चाहिए तो मैं एक instant पर बात कर रही हूँ, either I am talking about the change at point P or Q. तो let's say मैं P point पर निकालना चाहती हूँ what is the rate of change of y with किस rate से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं ये निकालना चाह रही हूँ इस ग्राफ में. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इस Q पॉइंट को किसी तरीके से P पॉइंट के पास ले आए, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 कर दें,
तो ये Q पॉइंट P पर आ जाएगा। तो जब वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था वो क्या हो जाएगा, वो एक इंस्टेंट पर मुझे चेंज मिल जाएगा। So basically I am trying to move this point Q to point P. बट Q को P पर लाने का मतलब है इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस था वो हम जीरो कर रहे हैं। सो जीरो कैसे कर सकते हैं, वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। सो इफ आई टेक डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, सो ऑब्वियसली Q विल बी वेरी 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 क्लोज टू दिस पॉइंट। और जब ये बहुत क्लोज होगा, सो बेसिकली जो मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। Is it clear? Is it clear, Yes, ma'am. everybody? Okay. So as the limit delta x tends to 0, the secant line will pass through only one point P on the curve. That is, the secant line approaches the tangent line. This is how, using the process of differentiation, we find the instantaneous rate of change of a function or the slope of a tangent line. Now here, instead of writing the instantaneous rate of change in y with respect to x at x naught, we say that the derivative of the function at x naught is this. So this is called the derivative of the function at point x naught y naught. इस point पर ये जो हमने निकाला है instantaneous rate of change of y with respect to x, एक इंस्टेंट पर एक वेरिएबल कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट गिव्स अस द डेरिवेटिव। एंड अगर ज्योमेट्रिकली इसी चीज को समझना चाहे तो डेरिवेटिव इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द tangent to the curve at this particular point. So slope only gives you the average rate of change, whereas derivative gives you the instantaneous rate of change, right? Derivative का अगर फॉर्मूला से देखना चाहें, सो इट इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज इन y by change in x, and this change in x is tending to zero. That is basically the derivative of the function. और ज्योमेट्रिकली हमें याद रखना है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर क्या स्लोप है हमारे टैंजेंट का, दैट इज द डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी मैं पूछूं कि स्लोप और डेरिवेटिव कैसे डिफरेंट है, आर दे डिफरेंट? Ma'am, slope is an average and ma'am derivative is for instantaneous. राइट, It is तो at a स्लोप point. हमेशा एवरेज होगा और डेरिवेटिव हमेशा एक इंस्टेंट पर होगा, तो वो इंस्टेंट मतलब एक पॉइंट पर निकाला जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। The derivative is usually denoted by the symbol dy by dx. So we saw here that the derivative of the function at a particular value of x is its instantaneous rate of change at that point. So here, when we say it is the instantaneous rate of change, so can you tell me what is changing with respect to what? Anybody? क्या change कर रहा है with respect to the other thing? क्या change कर रहा है? Ma'am, in instantaneous speed will change with respect to time. Speed is changing with respect to time? Yes, ma'am. Here, okay, in terms of y and x बताओ, जो हमने लिखा हुआ है y is equals to fx, what is changing here? Is y changing with respect to x or x changing with respect to y? Ma'am, Anybody? y will change with Yeah. respect. Y is changing with respect to x? Good. So whenever you write dy by dx, it means that y is changing with respect to x. जो भी नीचे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में ये चीज चेंज होती है, बिकॉज ऑल्सो यू कैन सी y इज डिपेंडेंट ऑन x. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वही चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हियर योर x इज इंडिपेंडेंट क्योंकि आप x को वैल्यू डालोगे और फिर x पर हमारा डिपेंड कर जाएगा y. So always y is dependent on x.
So we say dy by dx. This is the derivative of the function of y with respect to x. In the next lesson, we will further explore the concept of derivatives. We will see how to exactly find the derivative for a particular function. So this is the symbol. You must remember that dy by dx will be taken, will be written as the derivative of the function y with respect to x, and it will be given by this formula. Limit delta x tends to 0, f of x naught plus delta x minus f x naught upon delta x. Now delta x बार बार लिखना convenient नहीं होता है. अभी के लिए हम देख लेते हैं, हम इसको change करके फिर दूसरा term लिख लेंगे जो ज़्यादा easy रहेगा. Also, this is called the first principle of derivative. If you are using this formula, this is called the first principle of derivative. And this is the geometrical interpretation of derivative. That derivative of a function will be given by the slope of the tangent to the curve. एक tangent जिस भी point पर हमने curve के बनाया हुआ है, उसका अगर हम slope निकाल लेते हैं, that will give us the derivative of the function. Right? So let's see another video जहां पर हम derivative ही आगे पढ़ रहे हैं, कैसे निकालना है देखते हैं. Rate of change. Imagine a quantity denoted by variable y, which is continuously changing. But how it changes is controlled by another quantity denoted by variable x. We can say that the variable y, called the dependent variable, is a function of the variable x, called the independent variable. The function f tells us how the value of y changes with the value of x of a function. What is the rate of change of y with respect to x at that particular value of x? That is how fast or slow the value of y changes with respect to x. In our previous video, we saw how to find the derivative of a function. The whole process is summarized like this, and it's called differentiation. So you can write it as dy by dx at point x naught y naught, and this is another symbol or representation. आप इसको f dash x naught भी लिख सकते हो. मतलब आपने derivative निकाला है f का, जब आप prime लगा देते हो उसके ऊपर, so it means f prime x naught, that is the derivative at this point x naught. And this is the same formula that we have done. This ratio here is called the average rate of change between two values of x, which are x naught and x naught plus delta x. If delta x is greater than 0, then x naught plus delta x will be somewhere here on the x-axis. Then this ratio is the slope of the secant line between these 2 points. Now, as we find the average rate in the interval closer and closer to x naught, we see that these secant lines approach the tangent line at x naught. This would be true even if we take delta x to be less than 0. Then x naught plus delta x will be somewhere here on the x-axis. And as we find the average rate in the interval closer and closer to x naught, we see that these secant lines approach the tangent line at x naught. So we say that in the limit delta x tends to 0, the average rate of change approaches the instantaneous rate of change at x naught. That is nothing. So here what they have said is कि delta x जो हम change ले रहे हैं वो greater than 0 भी हो सकता है या less than 0 भी हो सकता है. मतलब अगर greater है obviously x naught में कुछ add कर रहे हैं और less x naught से कुछ minus कर रहे हैं. But no matter what कि delta x क्या है, अगर आप देखोगे जो tangent बनेगा, whether you approach it from left hand or right hand side, the tangent will be the same. मतलब ये values left hand side से और right hand side से दोनों ही same आ जाएगी. So left hand limit और right hand limit इसके लिए, ये function के लिए exist करेगी. तभी हम बोलते हैं the function is differentiable. Function का derivative निकाला जा सकता है क्योंकि ये दोनों values same होंगी. ठीक है. बट अगर लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करते हो और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो, वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो अगर कभी बोला जाए
check whether the function is differentiable or not, then आप उसका left hand derivative और right hand derivative दोनों निकालोगे by substituting the value of delta x, मतलब माइनस और पॉजिटिव दोनों के साथ. बट अगर सिर्फ बोला गया इसका डेरिवेटिव निकाल दो, ये नहीं बोला शो करो कि एग्जिस्ट करता है, सिर्फ बोलेंगे निकाल दो, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. But the derivative of the function at x naught. We denote it by putting dash like this on the notation for the function. Note that the limit delta x tends to 0 does not mean we put delta x equal to 0 in this ratio. This would result in the ratio being equal to 0 divided by 0, which does not make any sense. In this video, we will understand what this really means. Along with it, we will also explore different theoretical aspects of the derivative of a function. Consider this simple example. Y is equal to square of x. Let's say we want to find the derivative of this function at a particular value of x, say. So here we are considering this function and we will find out the derivative of this function. ठीक है, इसको हम exist करता है या नहीं करता ये नहीं दिखा रहे हैं, हम सीधा इसका derivative find कर रहे हैं और x1 पॉइंट पर हम फाइंड करने वाले हैं. अब ये ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहला पार्ट आपको यही सीखना है, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. आज की क्लास में हमारा मेन जो हमें निकालना सीखना है, जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो इसी के बेसिस पर है. x1. Can you find this out? Actually, in one of our previous videos, we found the answer to this. We had found the instantaneous speed of an object for such a relationship between the distance traveled and the time elapsed. To find the derivative, we would first find the average rate of change. That is, how the value of function changes as the value of x changes by delta x. F of x1 plus delta x and f of x1 will be equal to this. After expanding this term and simplifying, we will get this. So we have used just the formula जो अभी हमने देखा था average rate of change का, तो that was f of x plus delta x minus fx upon delta x. क्योंकि इस point पर निकालना है x1 पर, so we have substituted x1. fx is given by x1 plus delta x. जगह पर ये पूरी चीज substitute कर देंगे, उसको सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफाई कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करके, सो दिस गेट्स कैंसल्ड. तो आपके पास ये चीज आती है एंड ऑल्सो यू कैन सी डेल्टा एक्स इज कॉमन, सो यू कैन टेक कॉमन एंड कैंसल दैट ऑल्सो. And after dividing by delta x, we will get this final expression. Now we know that to get the derivative, we will need to consider the interval delta x tending to 0. So we put delta x equal to 0 here and get this. It's the derivative of the function at x1. But now notice that all these expressions are equivalent to each other. So what if instead of putting delta x equal to 0 here, we put delta x equal to 0 here or here? We see that we will get the numerator and the denominator both equal to 0. But for this final expression, we got the answer as 2 times x1. So what's going on here? Why can't we substitute delta x equal to 0 here and not here? Actually, substituting delta x equal to 0 at any step here is not correct. Notice that in these steps, we are dividing by delta x. And we know we can't divide by 0. What delta x tends to 0 means is that we are considering smaller and smaller values of delta x. The values of delta x are close to 0, but never 0. But among all these steps here, delta x does not explicitly occur in the denominator here. So it's easy to see from this step that as delta x gets smaller and smaller, the average rate gets closer and closer to 2 times x1. So substituting delta x equal to 0 here is just convenient to reach this conclusion.
But always be aware of what it really means to put delta x equal to 0 here. Now notice one more thing. Although we had not explicitly stated here we took delta x to be greater than 0. That is, we are finding the average rate between x1 and the values of x greater than it. But it is necessary to consider the case when delta x is less than 0. That is, finding the average rate between x1 and the values of x lesser than it. As we find the average rate when delta x tends to 0, this average rate should approach 2 times x1. So let's find the average rate in this case when delta x is less than 0. We can see the calculation for finding the average rate of change will be the same as this. But in the first case, this average rate will always be greater than 2 times x1. In the second case, this average rate will always be less than 2 times x1. Now when delta x tends to 0, both these average rates will approach the same limit 2 times x1. Now we can conclude that the derivative of this function at x1 is equal to 2 times x1. So we see that to find the derivative of a function at a particular value of x, we have to find the average rate of two cases. When delta x is greater than 0 and when delta x is less than 0. Now when delta x tends to 0, if both these average rates approach the same number, then that number is the derivative of the function at that particular value of x. But consider this function now. Okay, so this function we will discuss later. अभी जो हमने concept पढ़े हैं हम एक बार जल्दी से उन्हीं को revise करते हैं. देखो, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा what do we understand by derivative? So derivative gives you the क्या बताता है? Instantaneous Rate of change. rate of change किसका? Of y with respect to x. कोई भी एक variable का with respect to another variable. So we write it as dy by dx. We can either write it as f dash of x. Here the dependent variable is y, independent variable is x. Here the dependent variable is f, independent variable is x. So these are the two ways you can write the derivative of the function. इसको represent कर सकते हो. And also अगर इसको graphically आप समझना चाहो, so it is the क्या होता है? Slope of the tangent to the curve at a particular point. Right? यही देखा हमने सबसे पहले. Then उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि स्लोप से ही हमारे पास ये आता है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज या फिर एवरेज स्पीड, जैसे हमने डिस्कस किया था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी. कोई भी अगर हमारे पास ग्राफ था और पी पर हम अगर उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज देख रहे थे, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज क्यू, सो हमने देखा था दैट वाज आउट एज लिख कर दिखा देती हूँ. दिस पॉइंट इज x नॉट एंड दिस इज y नॉट, एंड ये हमारे पास हो गया था x नॉट प्लस डेल्टा x एंड y नॉट प्लस डेल्टा y. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे जो अभी हमने उस फिगर में देखा था. सो दिस वाज f ऑफ x नॉट माइनस अपॉन डेल्टा x. यही था एवरेज स्पीड. चेंज इन y बाय चेंज इन x करके जो हम निकाल रहे थे, चेंज इन y बाय चेंज इन, पहले चेंज इन y आ गया और चेंज इन x हमारे पास यहाँ से आ जाएगा. सो ये हमने निकाल लिया था. दिस वाज एवरेज रेट ऑफ चेंज. बट अगर इसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हमें कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमने क्या किया था? इस Q पॉइंट को P पॉइंट के पास लाए थे. दैट मीन्स वी आर टेंडिंग दिस एज 0. तो इसी में अगर मैं चेंज कर दूं दैट लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। सो ये जो अब मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं ऑफ द फंक्शन y with respect to x और the function f with respect to x, क्योंकि जो अभी मुझे चेंज मिल रहा था वो एवरेज से कन्वर्ट होकर क्या बन गया, एक इंस्टेंट पर बन गया। तो डेरिवेटिव डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। वो एवरेज नहीं देगा, वो आपको हमेशा इंस्टेंट पर चेंज बता देगा। नाउ मैं आपको क्या बोल रही थी कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एंड क्योंकि ये डेल्टा एक्स बार बार लिखना इतना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना नोटेशंस यूज कर लेंगे। सो यू कैन राइट इट एज the derivative of f with respect to x. You can write it as limit h tends to 0. I am writing delta x as h. So f of x plus h minus fx upon h. ठीक है, सिर्फ मैंने x नॉट की जगह x लिख लिया है क्योंकि मैं इधर निकाल रही थी मैं एट पॉइंट x नॉट, इधर मैं x पर इवेल्युएट कर रही हूँ और डेल्टा x की जगह पर मैंने लिख लिया है h. सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यहां तक सबको क्लियर है तो बताओ, या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीबडी, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. एवरीबडी इज क्लियर? No, ma'am. सो ओके, सो ग्राफिकली अगर कभी भी आपको बोला जाए कि ये कर्व के लिए आप बताओ व्हाट इज द चेंज, सो व्हाट विल बी द चेंज फॉर अ गिवन कर्व, change in y by change in x, what will be the change for a given curve if it is not a line? अगर एक कर्व गिवन है तो उस पर चेंज इन y by change in x क्या होगा? It will be given by what? Ma'am, limit h tend to 0 fx plus h minus f of x by h. It will be given by this, है ना? It will be of the tangent. कर्व की बात कर रही हूँ मैं, ग्राफिकली की बात कर रही हूँ। सो यू विल ऑलवेज से कि वो टैंजेंट का स्लोप होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। और अगर मैं आपसे मैथमेटिकली पूछूं, सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग यही करते हैं कि कुछ 2-3 फंक्शंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से इवैल्यूएट करके देखते हैं whether the derivative exists or not, what is the derivative of the function. Now इसी में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो होता है वो आपको बोलेंगे find the derivative, find the derivative using first principle। 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और या बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या होगा show that the derivative of the function exists or the function is differentiable। 2 चीजें हो सकती है। Yes, Ma'am, are you sharing a screen on the whiteboard? yes, you can't see, There is nothing on my screen. others can see। Yes, ma'am. Yes. वनु वंशिका आप का कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार देख लो। Okay, ma'am. सो दीज आर द 2 थिंग्स पूछे जा सकते हैं। अगर डेरिवेटिव कभी भी बोल रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, सो यू विल डायरेक्टली यूज दिस, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल हमें पता है विल बी यूजिंग दिस, तो हम सीधा इसी से इवैल्यूएट करेंगे और जो भी मेरे पास आएगी लिमिट, दैट विल बी माय डेरिवेटिव। नाउ व्हेन दे से कि आप शो करो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका भी यही मतलब है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालना होगा।
तो अब इस केस के लिए आप देख लो, whenever they say कि exist कर रहा है और show करना है आपको, then you will show both the things, that left hand derivative and right hand derivative both exist and are equal. क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच. तो यही तो इधर से ही तो यही लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना. तो इधर से ही मैं देख लूंगी व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इसी से निकालूंगी राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूजिंग दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, क्योंकि अब h लेफ्ट हैंड साइड पर है नेगेटिव हो गया, माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h. That is the left hand derivative. And right hand derivative will be limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. So basically यही हमारा कर्व है. बट अगर ये Q पॉइंट आपका x प्लस डेल्टा x प्लस h टाइप है और ये x टाइप है, तो हमारे पास इससे लिमिट निकल रही है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट. और अगर यहाँ पर है x माइनस एच, तो हमारे पास इससे इवैल्यूएट हो रहा है. बट दोनों ही मिलाकर बेसिकली दोनों ही पॉइंट्स को, इस q या q डैश को जब आप p पर लाओगे, सो दैट शुड बिकम अ टैंजेंट टू द कर्व. क्योंकि एक कर्व के ऊपर जो टैंजेंट होगा उसी का स्लोप हमें क्या देगा, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो you cannot have two different tangents at this point. You must have a unique tangent at this point and that will be your derivative of the function. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन यूजुअली ये आता है, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आप सीधा ही जो फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन है उससे लिमिट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा. बट अगर बोल दिया शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, तो अब शो करना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों दिखाने होंगे. इज इट क्लियर? Is it clear? This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. ओके चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सो दैट जो हमने अभी पढ़ा है वो हमें समझ आए कि निकालना कैसे है. ओके द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. अब क्या पूछा गया है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है. ये नहीं बोला कि शो करो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या डिफरेंशिएबल है, तो आपको सीधा इसका डेरिवेटिव निकालना है. ओके सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट. क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो हम x पर ही निकालेंगे. विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. ठीक है, यही होती है डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल की. So we have written the definition. Now we will substitute the value and we will see कि क्या हमारे पास आंसर आता है. तो आपके लिए मैं यहाँ पर साइड में करके भी दिखा रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्योंकि एफ एक्स हमारे पास डिफाइंड है x टू द पावर n, तो अगर मैं इससे निकालना चाहूँ f ऑफ x प्लस एच बिकॉज आई नीड द वैल्यू हियर, तो मैंने क्या किया, x की जगह पर x प्लस एच पुट कर दिया है ना. तो ये पूरी चीज उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी. So this is my f of x plus h की value, that is x plus h whole raised to power n. And fx तो already x to the power n defined है upon h, और इसके आगे लिमिट था तो लिमिट h tends to 0. लिख लिया हमने. तो फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन लगा दी है मैंने टू फाइंड द डेरिवेटिव. इस स्टेप में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो. वैल्यू निकालने में किसी को भी डाउट है तो. No doubts? Okay, so now tell me how will you find the limit of the function, because you have already studied how to find the limit of any function. उन्हीं में से एक फंक्शन ये आप देख रहे हो, बताओ कैसे निकाल सकते हैं इसकी लिमिट. Anybody?
हैव यू स्टडीड एनी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म जहां पर लिमिट आपने निकाली हो? ऐसा कोई फंक्शन देखा है? मैम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट इधर तो ई नहीं है, हमें लिमिट के क्वेश्चन में जब निकाल रहे हैं तो ई होगा, तब आप एक्सपोनेंशियल वाला लगाओगे ना। अब ये तो वो फॉर्म नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है? मैम इन द एंड वी हैड डन अ थ्योरम। वेरी गुड। दैट वन। हमारे पास ये थ्योरम था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। मैंने आपको बताया था अगर पावर 2, 3, 4 ऐसा कुछ है तो हम फिर भी फैक्टराइज कर पाएंगे, बट अगर एन है, बहुत बड़ी पावर है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम इस थ्योरम का यूज करके हमेशा अपनी लिमिट निकाल सकते हैं। तो वही सेम चीज यूज करके मैं यहाँ पर लिमिट निकालूंगी। अब देखो यहाँ पर जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप किया ना, नाउ योर क्वेश्चन रिड्यूसेस टू फाइंड द लिमिट, और लिमिट अब उन्हीं से निकलेगी जो आप, या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वही सारे फंक्शंस होंगे जो आप पढ़ चुके हो। तो आप देख रहे हो दिस फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म, तो मैं इससे कंपेयर करके इसको बनाना चाहूंगी। नाउ एज यू कैन सी हियर वी हैव अ सिंगल x, तो यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हैं। सो आई कैन राइट x plus h as y. So if I substitute this into my function, it will become y to the power n minus x की जगह पर भी y के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करना, x तो एज इट इज रेज टू पावर n है तो ये रख लेंगे, नीचे h को सब्सटीट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड x, तो ये हो जाएगा यहाँ से y माइनस x। तो राइट हैंड साइड इतना तो हमने ये सब्सटीट्यूट कर लिया है। नाउ वी विल ऑल्सो चेंज द लिमिट, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में अब h है ही नहीं, वी हैव y, तो y के टर्म्स में देखेंगे। सो एज h टेंड्स टू 0, as this is tending to 0, you can see y is tending to x. So you can write limit y tends to x. And now if you see both of these, ये जो theorem है और ये वाली form, are they not same? एकदम exactly same बन रहा है या नहीं? वही बन गया है। Yes, so ma'am, it we is know the by same. the theorem कि limit इससे दी जाएगी। So for this function the limit will be given by n x to the power n minus 1. So this is your derivative of x to the power n using the first principle of derivatives. So what you have to do, you will write जैसे definition लिखी उसमें value substitute करो, f of x plus h f of x. Substitute करने पर your question reduces to limit question. Now you already know how to find the limit of any function. आप निकालोगे। Yes आरुषि? मैम मुझे फर्स्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया जो आपने रेड में लिखा है। This is the first principle of derivative जो अभी हमने पढ़ा था। First principle क्या था? It was this limit delta x tends to 0 of this ना, ये अभी हमने पूरी वीडियो इस पर देखी थी। यस मैम। है ना? यस मैम। तो मैम मैंने सिंबल्स यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। इन प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स आई एम यूजिंग एच, क्योंकि आप अपने बुक में एच देखोगे और बार बार डेल्टा एक्स लिखना इतना कन्वीनियंट भी नहीं है, तो हमने एच लिख लिया है और एक्स नॉट की जगह पर एक्स लिख लिया है। सो यही सेम चीज लिखी है हमने इधर। सो दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट प्रिंसिपल, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है। यस तो मैम एक बारी फिर से मैम वो वाली स्लाइड में मैम एक और डाउट था मैम। तो फिर जब आपने इसको x प्लस एच को y तो आपने क्वेश्चन में आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहे हो x प्लस एच को इन टर्म्स ऑफ y, तो अब h तो रहा नहीं ना, तो यहाँ पर भी तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं बेसिकली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ ना, ताकि मैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करा पाऊँ। मुझे ऊपर दिख रहा है कुछ एनीथिंग रेज टू पावर n बन रहा है माइनस x टू द पावर n, तो अब फॉर्म किससे रिलेट कर रहे हो? इससे रिलेट कर रहे हो, तभी लिमिट निकाल पाएंगे ना।
ओके मैम, ओके, समझ तो आ गया। हमने इसको y लेट किया, तो नीचे भी वही फॉर्म होनी चाहिए y माइनस एक्स, इसलिए हमने इसको चेंज किया। ठीक है। Ma'am, shouldn't the final answer be ny raised to the power n minus 1 in place of x? Yes, ma'am. Even I was thinking ओके, that. देख लो, खुद कंपेयर करके देख लो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप कंपेयर करके देखो आपके Yes, पास। ma'am, because if we compare, ma'am, the line which you've written, recall. हाँ, तो बेटा ये देखो ना, सॉरी Ma'am, there इधर we a have होता है, सॉरी इधर a होता है, ये मैंने exactly, गड़बड़ yes, लिखा है, ma'am. Yes, ma'am. राइट, इट इज n Yes, a ma'am. to the power n minus Ma'am, 1, now it's fine. राइट, ओके। Yes, वो ma'am. बाय मिस्टेक गलती से लिखा था, इट वाज n a to the power n minus 1 and then you will write it. क्लियर है सबको? चलो एक और Yes, क्वेश्चन ma'am. करके देखते हैं। अब ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, e to the power x. You don't have to show that it exists, you only have to find it using first principle. करो। This is your first principle of derivative. Using this you are finding the derivative. अब मुझे ये बताओ, what is the value of f of x plus h? Who will tell me what will be f of x plus h? Only I need the value of f of x plus h. Anybody? If you have raised your hand, I cannot see it. तो आप बोल सकते हो आज के लिए, मुझे दिख नहीं रहे हैं। Ma'am, it will be e Yes, raised to power x plus h, or we can write it as e raised to power x into e raised to power h. Very good. So firstly, because fx is defined like this, तो अगर मुझे f of x plus h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x था तो इसके पावर में x था, तो एज इट इज मैं उठाकर एक्सपोनेंशियल की पावर में ये चीज पुट कर दूंगी, तो इट विल बी e to the power x plus h. तो सबसे पहली चीज तो आपने यही ठीक लिख ली है, माइनस f of x तो यही फंक्शन है, e to the power x लिख लिया अपॉन h, राइट। फर्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट आपने एकदम करेक्ट कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज रिड्यूस टू लिमिट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, लिमिट है और लिमिट के अंदर कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है लिमिट के अंदर? Ma'am, this is exponential function. राइट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, Ma'am, we एक्सपोनेंशियल write it in the form. वी Ma'am, राइट इट इन द, हाँ, limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x. वेरी गुड। तो जब भी हमारे पास ये फंक्शन होता है तो हम इसको लिखते हैं एज, इससे रिलेट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x is equals to 1. तो अब इसी फंक्शन में मुझे इसको इस फॉर्म में लाना होगा फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एज यू कैन सी e to the power x plus h can be written as, जो भी सानवी ने बताया भी था, we can break it and write it as e to the power x into e to the power h minus e to the power x upon h. बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप जानते हो कि पावर्स जब एडेड है तो ऑब्वियसली उनके बेस मल्टीप्लाई होते हैं, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर नाउ दैट e to the power x can be taken as common, राइट? तो अंदर आपके पास क्या आ गया, e to the power h minus 1 upon h लिखा जा सकता है। Yes, ma'am. Can I write e to the power x out of this limit? Is it possible? Can I take this out of Yes, the limit? ma'am. लिख सकते हैं, क्यों?
Ma'am, because it will be a constant. It will be treated as a constant because यहाँ पर लिमिट जो अप्लाई हो रही है वो h के लिए अप्लाई हो रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, इसीलिए हम इसको बाहर लिख सकते हैं। तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। देखो जरा, जो हमारे पास यहाँ पर लिमिट है यही वो एग्जैक्ट लिमिट है ना, इंस्टेड ऑफ x हमारे पास यहाँ पर क्या है h, तो क्या हो गया e टू द पावर x इंटू 1। तो क्या आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आ गया, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये खुद ही आता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बाकी बच्चे किसी को कुछ भी डाउट है कोई भी स्टेप में आप पूछ सकते हो, देखो ध्यान से। नहीं है किसी को भी डाउट? तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो। करें? हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay, do this question. Find the derivative using first principle. Yes, ma'am. Okay, do this question. Root of ax plus b. Find the derivative of this. It will be f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. Arushi, what will be the value of f of x plus h? Ma'am, it will be, ma'am, ax. Root of ax plus b. This is the function. Huh. Yes, ma'am. So, ma'am, it will be root of ax plus b plus h. fx is this function. f of x plus h निकालना है, तो आप क्या निकाल रहे हो बताओ? आप बोल रहे हो इट विल बी रूट ऑफ ax प्लस b प्लस h, ये है आपकी वैल्यू? Yes, ma'am. ओके। और यस सानवी? Ma'am, it will be root of a into x plus h plus b. ओके गुड, ध्यान से समझ लो ये स्टेप, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हो, जब x है ना यहाँ पर तो आपको लगता है अब x प्लस एच है तो एफ एक्स प्लस एच होगा, तो आपने पहले रूल्स पढ़ चुके हो। ये देखो f ऑफ अगर a प्लस बी होता है दैट इज f ऑफ
a plus f of b, है ना? It is never equals to this f of a plus b is equals to f of a plus b. ये चीजें नहीं होती हैं, ये आपने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में पढ़ा था. ऑल्सो मैं आपको बहुत शॉर्टकट चीज बता रही हूँ कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधा बस वैल्यू कैसे उठाकर पुट करनी है. जब x यहाँ लिखा है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, x यहाँ है तो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में x है. तो अब जब मैं f ऑफ x प्लस एच पूछ रही हूँ तो f ऑफ x प्लस एच का मतलब है यहाँ पर लिखा है x प्लस एच, तो इसी फंक्शन में x की जगह पर x प्लस एच होना चाहिए. तो जब आप पुट करोगे इट शुड बी f ऑफ x प्लस एच, जहाँ x था वहाँ x प्लस एच लिख दिया उसकी जगह, प्लस b एज इट इज. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. क्योंकि अगर fx ये डिफाइंड है, so obviously what is f of 2? Arushi, what will be f of 2? Ma'am, ma'am, it will be 2 only. It will be 2? No, ma'am, it will be root of 2a plus b. Right, 2a plus b. So what you have done, you have substituted the value of x here, है ना? तो जब आप कुछ अलग देखते हो तो आप करेक्ट पुट कर पाते हो, बट जैसे ही आप x के टर्म्स में देख लेते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे पुट करें. तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, जब x था तो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में x था, जब 2 पर वैल्यू निकाल रहे थे x की जगह पर हमने 2 पुट किया. अब जब x प्लस 2 है तो x की जगह पर ही हम x प्लस 2 पुट करेंगे और कहीं कुछ छेड़ना नहीं है. ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि ये वैल्यूज जब तक ठीक पुट नहीं करोगे आप आगे नहीं कर पाओगे. ओके, सो वंस यू नो what is the value of x plus h, now substitute what is fx and divided by h और लिमिट निकालो. So minus root of यही हमारा f of x है upon h. Now who will tell me how will we find out the limit of this function? कैसा function दिख रहा है ये? Anybody else who wants to try? कैसा function? सानवी? Ma'am, we can just simplify it. We can open the bracket and then we can simplify it and write it. And then we can take the conjugate of this and then simplify Right. it further. Because it is a root function, we are going to rationalize it. So that is the main step here. क्योंकि हमें दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है, ये रूट फंक्शन है, और रूट फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं. तो न्यूमरेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. करेक्ट, कर दो. ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. So this becomes ax plus ah plus b. I have multiplied both of them. A square minus b square बनेगा, तो स्क्वायर हट के ये आ गया आपके पास माइनस b square, that is ax plus b, और अपॉन आपके पास है h इंटू रूट ऑफ ax plus h plus b प्लस रूट ऑफ ax plus b. I think सबका यहाँ तक तो आया होगा. When you open the bracket, ax will get cancelled with ax, b will get cancelled with b. So you are left with limit h tends to 0, ah upon h into root of ax plus ah plus b plus root of ax plus b. है ये चीज? सब देखकर बताएंगे मुझे. Are you all getting? Can't we Yes, ma'am. Can't you just? cancel h? We will cancel h. मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि सबको सारे स्टेप्स दिख जाए. आप इधर ही स्टेप पर कैंसिल कर सकते थे. ठीक है? So now
if you have reached till here, so you can see h cancel हो रहा है, h cancel कर दिया. Now your question is reduced to जो भी हम cancel कर सकते थे, factorize, rationalize हमने कर लिया है. Now we will substitute the limit. So now you can substitute h tends to 0, मतलब h को 0 put कर लेते हैं. So a में तो h है ही नहीं, तो a as it is. नीचे जहाँ भी h है वो term 0 हो जाएगा. So here we have h, so this will become 0. So you have root of ax plus b plus root of ax plus b, which you can write as 2 into root of ax plus b. This is your derivative. Just see if all of you are getting this. Yes, ma'am. Yes. So today what we have done is we have started with derivatives. We have understood the concept of derivative, how it is different from slope. What do we mean by derivative of a function graphically and mathematically? First principle of derivative देखा है हमने, how to find the derivative using first principle. And उसी के हमने कुछ 2-3 आज questions करके देखे हैं, right? I'll send you few more questions on first principle of derivatives. Please try it और आज की वीडियो फिर से देखना ताकि आप डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर पाओ, because